आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दैट मीन्स वी हैव एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू 0। हम कुछ फैक्टर फॉर्मूला रिमेंबर करेंगे अकॉर्डिंग टू विच ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर हम फैक्टर फॉर्मूलों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे पास फाइनली हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी हैव एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वन प्लस वन स्क्वेयर इक्वल टू 0। एंड हमारे पास दो फैक्टर आ जाते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। दैट मीन्स इधर एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। x minus 1 equal to 0, that means x equal to 1. So first cube root of unity is equal to x equal to 1. So we need to find other root of the equations where x square plus x plus 1 equal to 0. So हम जानते हैं quadratic equation से we have quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. First of all we need to calculate the roots of these equations. As we know, roots of this equation equal to x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, the standard form of to solve any quadratic equations. So if we compare this equation with the standard equation, we will get value of a equal to 1, value of b equal to 1 and value of c equal to 1. So when we put value of a, value of b and value of c in this equation to find the root of x square plus x plus 1, so we will get x equal to minus 1 plus minus under the root b square which is equal to 1 square minus 4 into 1 into 1 upon 2 into 1, which is finally comes out to be x equal to minus 1 plus minus under root minus 3 upon 2. So we have value of x equal to minus 1 plus minus under root minus 3 upon 2. So since we know that under the root minus 1 equal to iota, so we can say we have x equal to minus 1 plus minus under root minus 1 into under root 3 upon 2. That means x equal to minus 1 plus minus under root 3 iota upon 2. So finally we have 3 root of cube root of unity which equal to x equal to 1 and x equal to minus 1 plus under root 3 iota upon 2 and minus 1 minus under root 3 iota upon 2. So let us denote x equal to minus 1 plus under root 3 iota upon 2 equal to
omega. Let us say minus 1 plus under root 3 iota upon 2 omega. So you also need to express minus 1 minus under root 3 iota upon 2. अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इन रूट्स को ध्यान से देखेंगे, तो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग कोरिलेशन ड्रॉ होता है. अगर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आइटा है अपॉन 2 है, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आइटा अपॉन 2 होगी. सो कैलकुलेट करते हैं. Let us suppose we have omega into omega equal to minus 1 plus under root 3 iota upon 2 into minus 1 plus under root 3 iota upon 2. This comes out to be finally minus 1 plus root 3 iota to the whole square upon 4. So we have omega into omega equal to minus 1 plus under root 3 iota to the whole square upon 4, and we also know that a plus b square equal to a square plus 2ab plus b square. So we will finally get minus 1 square plus root 3 iota to the whole square plus 2 into minus 1 into root 3 iota upon 4. So this is equal to omega square, which is equal to further equal to minus 1 to power 2 means 1 plus root 3 square into iota square minus 2 root 3 iota upon 4, which is further equal to 1 plus root 3 square equal to 3 into iota square minus 2 root 3 iota upon 4. We also know that value of iota equal to under the root minus 1. So we have iota square equal to minus 1. So omega square finally comes out to be 1 minus 3 minus 2 root 3 iota upon 4. Further equal to minus 2 root 3 iota upon 4. Take 2 as common, 2 common, minus 1 minus root 3 iota upon 4. 4 goes with 2, so finally we have omega square equal to minus 1 minus root 3 iota upon 2, which equal to the other root of unity. If we know we have three roots of unity, x equal to 1, x equal to minus 1 plus under root 3 iota by 2, and x equal to minus 1 under root 3 iota by 2. So if this equal to omega, this comes out to be omega square. So finally we have 3 cube root of unity, x equal to 1, x equal to omega, and x equal to omega square. We have complex cube root of unity as x equal to 1, x equal to omega square, and x equal to omega cube. So we will try to find some relation first. First relation is product of cube root of unity equal to 1. And sum of cube root of unity equal to 0 plus omega square equal to 0. So we will try to prove first equations. As we know, we have complex cube root of unity as 1 omega and omega square. So 1 into omega square equal to omega cube, which is further equal to 1 into, as we know, omega equal to minus 1 plus root 3 iota upon 2, and omega square equal to minus 1 minus root 3 iota upon 2. So we have minus 1 plus root 3 iota upon 2 into minus 1 minus root 3 iota upon 2. And we also know that
take 2 and 2 from denominator as a common, so we have 1 upon 4 into 1 plus root 3 iota into minus 1 minus root 3 iota. We also know a plus iota b into a minus iota b equal to a square plus b square. So from this formula we will get 1 upon 4 into minus 1 square plus root 3 square, which finally comes out to be 1 plus 3 upon 4, which equal to 1. And so first and second we have 1 plus omega square, which equal to 1 plus minus 1 plus root 3 iota by 2 plus minus 1 minus root 3 iota by 2. So we have 2 in denominator and we have 1 here, so 2 multiplied by 1 equal to 2. So to balance this side we have 2 plus minus 1 plus root 3 iota plus minus 1 minus root 3 iota. So root 3 iota goes with root 3 iota. Minus 1 equal to minus 2, so 2 minus 2 upon 2, which is equal to 0. So finally we have two important formula with us from complex cube root of unity. One is omega cube equal to 1, means प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1, और एक और फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को इन्वॉल्व करता है. सपोज भी है 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 64. सो हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है इक्वल टू राइट हैंड साइड के, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल टू 64, और ये इन्वॉल्व कर रहा है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. सॉल्यूशन एज वी नो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा square equal to 0. So in first part we have 1 plus 5 omega square plus omega cube into omega and 1 plus 5 omega plus omega square into 5 plus omega square. Left hand side equal to this. So as we know omega cube equal to 1 and 1 plus omega square equal to 0, that means omega plus omega square equal to minus 1. So put it in given equations, we will get 1 plus 5 omega square plus omega and 1 plus 5 omega plus omega square and 5 minus 1. Further we will do 1 plus 4 omega square plus omega into 1 plus 4 omega plus omega square into 5 minus 1 equal to 4. And again we will substitute omega plus omega square equal to minus 1. That means we have 1 plus 4 omega square minus 1 into 1 plus 4 omega minus 1 into 4. हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास माइनस 1 है, और माइनस 1 कैंसिल करता है माइनस 1 को, सेम यहाँ पे भी है, और हमारे पास फाइनली बचता है 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 ओमेगा इंटू 4. अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू 1 विच इज फाइनली इक्वल टू
64 इंटू ओमेगा क्यूब पास 1 है, सो विच इक्वल टू 64 विच इक्वल टू राइट हैंड साइड।